ঠিক আছে চলো এতে ঢুকতে শুরু করে দিই সবাই। If you are assuming the total kit in a single IC, then it is called microprocessor. I'm telling once again, if the total, if you have the microprocessor, you see the microprocessor is nothing but a yeah, if I'm talking about the microprocessor, so microprocessor basically, I'm repeat once again, microprocessor working in a kit in a bigger in size. In that particular kit, some peripheral ICs is there. What is the peripheral ICs? Peripheral ICs is nothing but a we can see like that. Peripheral ICs means helping hand. You can see just like a helping hand. You can see just like a helping hand. So peripheral IC is very important for the 8085 microprocessor. Without peripheral IC, it cannot be worked. Without peripheral IC, it cannot be worked. But means microprocessor cannot work alone. Microprocessor cannot work alone because it's just like a brain. It's just like a brain. Without hand, without body, everything is not there. Only brain is there. Microprocessor is just like a brain. And microcontroller is nothing but if total kit, whatever available in your kit, if you are assuming in a single IC, then it is called microcontroller. It's creating using a VLSI technology. The VLSI you will be learn little bit. Already someone is learned. Already someone will be learned. So microcontroller is just like a nothing but a using VLSI technology total kit in a single IC, that is called microcontroller. You can imagine is it nothing but a integrated circuit, nothing else. So in that microcontroller, everything is there. Means every peripherals like helping hand, like 8255 is basically used for 8255 is used basically to create the hands, create the IO ports, and others like timer, counter, RAM, ROM, all are connected in 8085 externally, but in 8051 all are inbuilt. So that is the advantage of 8051. And if I'm talking about if I have a laptop, the same configurations, if you have the same configuration as a desktop, so the laptop will be the most costly. But the same configuration, laptop and desktop, if I'm compare with, then it will be most costly is nothing but a laptop. Why is it costly? Because its size is small. If the size is small, that's why it's a costly.
So, sir, what are the what are the significant and what are the what are the requirement of it? What are the requirement of it? Means if it is a smaller, so it will be. I think it will be great because it will be help a lot because it is a require a smaller in space, smaller space. So it will be best. So with the help of that, if I'm talking about the cost, microprocessor kit, whatever working in every day in your college, so it will be cost near about 10,000. It will be cost near about 10,000. But if I'm talking about the microprocessor, microcontroller, so it cost near about 70 rupees onward. So if you are given 100 rupees, you will be get a good microcontroller. So it's a cost effective. It's a too much cost effective. So if I'm talking about the cost, it is a cost effective. So it is a very, very important industry where it is used. But till today, I'm not using in the laptop is a controller. It is a processor. Why it is a processor? Why not is a controller? It's a very, very important questions. Why till today we are not using the controller till we are using the processor. Next, my question is that how many softwares you have in your computer? Maybe n number of software you have. Maybe it is a 20, maybe it is a 30, maybe it may be 40, it may be 50, something like that. So microprocessor used for various job purpose. Remember, microcontroller used for dedicated job purpose only. Means only one job, one microcontroller is required. A different job, different microcontroller will be required. So I'm just telling once again what is the basic advantage and disadvantage. If microcontroller disadvantage, if you want to say microprocessor used for microcontroller used for dedicated job purpose, whereas microprocessor used for various job purpose, means whatever the job done by microprocessor, the same job can be done by microcontroller, no issue. But one problem is that only one software can be installed into the microcontroller. So if you want to install 30 30 software, then you need 30 microcontroller as well. So number of microcontroller will be different for different persons. That's for that particular reasons we are not using the microcontroller till today. We are using the processor in computer because we have a lot of software. But in the industry where dedicated job is required, like temperature measurement, digital thermometer, and nowadays thermal gun, whatever thermal gun is coming in the COVID. So thermal gun, those are nothing but all are can be done by a microcontroller, no issue. It can be measure the temperature, it will be displayed. There is a one software only required, means one program is there. But say you want to listen music, you want to type something, you want to you have a maybe you want to excel, something like that. So different jobs or different software is required. So different microcontroller will be required, and that's the difference between 8085 and 8051 microcontroller. Another in 8085, if I'm talking about the 8085, if I'm talking about the 8085, then 8085 is nothing but a working in 3 to 5 megahertz, but 8051 working in 12 megahertz. That's the important. 8085 is 3 to 5 megahertz and 8051 is 12 megahertz. If I'm talking about the frequency, near about 2.5 times, so it is another advantage. It's another advantage. And one advantage is most important, which are nothing but a in 8085, what are the memory capacity? If I'm talking about the 8085 memory capacity, that is nothing but a 64 kilobyte, right? 64 kilobyte in 8085 is nothing but a 64 kilobyte. So if I'm talking about the 64 kilobyte, means there is a no distinguish between program memory and data memory. There is a no distinguish between program memory and data memory. There is a no distinguish between program memory or data memory, because it's nothing but a create using it's nothing but a create using von Neumann architecture. It's create nothing but a von Neumann architecture. So there is a no distinguish between program memory and data memory. So it is a program memory plus data memory itself. It's the program memory and data memory.
In 8051, address bus and data bus basically same with respect to 8085. Here 16-bit address bus, here also the 16-bit address bus. Here, you know, frequency is different, but you know, data bus here is 8-bit, here also 8-bit. But you remember 64 kilobyte plus 64 kilobyte memory is there. 64 kilobyte plus 64 kilobyte. 64 kilobyte plus 64 kilobyte. This 64 kilobyte is nothing but a program memory. This 64 kilobyte is nothing but a for data memory. So if I am talking about the program memory and data memory, so you can easily calculate. It will be near about 128 kilobyte of memory. 128 kilobyte of memory. So what are the advantage of 128 kilobyte of memory? Just see, same address bus, just memory is twice with respect to that. Why? You know, it is a create using von Neumann architecture, but it's create using Harvard architecture. It's create using Harvard architecture. You know, with the help of Harvard architecture, the memory will be near about twice. A lot of things, I see the lot of things. Just again, I will be see some slides, so you will be able to understand. Any queries till now? So I can explain. Otherwise, Sir, I go further. Yeah. ये भवन न्यूमन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बताइए ना उसमें। आएगा हमारा स्लाइड में है सर, with diagram it will be there. I just give a brief descriptions. I will be coming one by one, everything will be there. Okay, sir. Von Neumann architecture means where the program memory and data memory, basically there is a no change. Where you can write the program in that particular memory location, you can write the data also. Just if I am given example like that, in 8085 microprocessor, sometime you store the data in 8000, sometime you write the program in 8000. It is a von Neumann architecture. There is a no distinguish. But in 8051, 8000 memory location is twice. One for program memory, another for data memory. Means 0000 to FFFF. This is a 2 times. 20000H, 20001H, as so on up to 2 FFFH. One is for program memory address, another for data memory address. I will be coming later on. It will be available. Any बहुत queries? फास्ट बता दिया सर। बहुत फास्ट कर दिया। फास्ट कर दिया तो बोलो तुम्हारा क्या क्वेरीज है? वो है मतलब कैसे कैसे बोल रहे थे, मतलब 00 एक ही एड्रेस के लिए, मतलब 8000 मतलब फिर से बोल रहा हूँ, हमारा कॉपी में देखो, फिर से बोल रहा हूँ एक बार, हमारा कॉपी में देखो सर। मैंने जो अभी दिखाया, 16 बिट एड्रेस के लिए एड्रेस बस क्या होगा? 16 बिट एड्रेस बस के लिए एड्रेस बस क्या होगा? देखो 0000 टू FFFF, यही एड्रेस, हर एक एड्रेस दो करके होगा 8051 के लिए। हर एक एड्रेस दो करके होगा 8051 के लिए। 0000 एक एड्रेस होगा डेटा मेमोरी के लिए, एक एड्रेस होगा प्रोग्राम मेमोरी के लिए। सिमिलरली FFFF दो एड्रेस होगा, एक होगा प्रोग्राम मेमोरी के लिए, एक होगा डेटा मेमोरी के लिए। दैट्स व्हाई 0000 टू FF यू कैन से एवरी मेमोरी लोकेशन ट्वाइस। हर एक मेमोरी लोकेशन दो बार करके रहेगा, एक रहेगा प्रोग्राम मेमोरी के लिए, एक रहेगा डेटा मेमोरी के लिए। दैट्स व्हाई मैंने जब इधर लिखाया, देखो मैंने लिखाया 64 KB फॉर प्रोग्राम मेमोरी एंड 64 KB for data memory. Total is 128 kilobyte. Just see my slide, so you will be get your answer, I think. और सर इसमें मतलब एक ही रहेगा इसमें 8085 में? 8085 में एक ही रहेगा, अलग कुछ नहीं, because program memory and data memory are same. Because program memory and data memory are same. Okay sir. पहला मेमोरी का सर इसमें एड्रेस कितना होगा? एड्रेस का जो रेंज होगा उसमें 0040 टू 4F तक चलेगा और फिर 40 टू 4F तक चलेगा। 40 to 4F तक चलेगा ना? मतलब जैसे प्रोग्राम मेमोरी का है तो 4 गो 0 और 4 गो F, मतलब उतना दूर रेंज रहेगा। फिर 40 और 4F तक चलेगा उसका डेटा मेमोरी का रेंज। हर एक मेमोरी लोकेशन मान के चलो दो करके रहेगा। अच्छा, मतलब जैसे कैसे बोले तुमको एक एग्जांपल देता है।
मान के चलो मैंने तुम्हारा कॉलेज में 1 से 60 रोल नंबर है. You know for how many stream in your college? 5 I think. Electrical, mechanical, civil, computer science, electronics. Am I right? यस सर. तो पांचों स्ट्रीम है, हर एक स्ट्रीम के लिए 60 करके रोल नंबर है, 1 से लेकर 60 तक. यस सर. तो एक रोल नंबर 1 कितना है एक ईयर में? मतलब समझे नहीं सर. समझा नहीं. पांचों स्ट्रीम है तुम्हारा, हाँ सर. हर एक स्ट्रीम में रोल नंबर 1 से लेकर 60 तक है. यस सर. तो तुम्हारा कॉलेज में मान के चलो तुम अभी 3rd ईयर में हो तो और 2nd ईयर में हो, व्हाट एवर इट इज. तो तुम्हारा जो रोल नंबर है तुम्हारा 2nd ईयर और 3rd ईयर में कितना, एक रोल नंबर कितना जन का है? 4 जन का होगा सर. 4 साल में 4 जन का एक रोल नंबर ना होगा. ना 4 साल में क्यों होगा? हम स्ट्रीम के बारे में बोल रहा हूँ, तुम्हारा ईयर में बोल रहा हूँ. एक तो सर मेरा होगा, फिर उसके बाद सेकंड फर्स्ट ईयर का एक होगा रोल नंबर, उसमें पाया नो नो जाएगा. नो नो नो. तुम्हारा कितना स्ट्रीम है? पांचों स्ट्रीम है, सर यस सर. 5. 5 होगा. तुम्हारा तुम्हारा कितना स्ट्रीम है? 5 है सर. 5 स्ट्रीम है. तो हाँ 5 स्ट्रीम में हर एक स्ट्रीम में तो एक रोल नंबर होगा किसी ना किसी को. हाँ 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 होगा सर. 5 तो होगा. 5 रोल नंबर है ना, 5 जन का तो एक रोल नंबर है. यस सर. तो हम एक रोल नंबर बोल देंगे तो तुमको पता चलेगा कौन कौन जाएगा. मैकेनिकल से जाएगा क्या, सिविल से जाएगा कि इलेक्ट्रिकल से जाएगा क्या, इससे जाएगा तो पता नहीं चलेगा. नहीं सर. माइक्रो प्रोसेसर में क्या था, एक ही सेक्शन था, एक ही सेक्शन था, उसमें सिर्फ मान के चलो इसी था, 1 से 60 रोल नंबर था. अब माइक्रो कंट्रोलर में क्या आ गया, 2 स्ट्रीम है, एक है प्रोग्राम मेमोरी, एक है डेटा मेमोरी. तो प्रोग्राम मेमोरी के लिए सेम एड्रेस, डेटा मेमोरी के लिए सेम एड्रेस, बट कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है. कैसे पता चलेगा माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा प्रोग्रामिंग का एड्रेस है, कौन सा डेटा मेमोरी का एड्रेस है? जब पिन कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तब पता चलेगा कौन सा प्रोग्रामिंग का है, कौन सा डेटा का है. ओके सर. बट सेम एड्रेस 2 टाइम्स, सेम एड्रेस 2 टाइम्स. अच्छा. समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा बहुत सर. थोड़ा बहुत नहीं तो हम फिर से बोलेंगे, कोई बात नहीं, हम 100 टाइम्स बोल सकते हैं, कोई बात नहीं. मैं फिर से एक बार बता देता हूँ. यस तुम्हारा सर. पांचों स्ट्रीम में एक नंबर रोल 5 बार है, 5 टाइम्स है तुम्हारा हम्म. ईयर में. तो हम यस सर. एक नंबर रोल को बुलाएंगे तो पांचों आ जाएगा. तो यस हमको सर. डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, ही इज फ्रॉम मैकेनिकल, ही इज फ्रॉम सिविल, ही इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, ही इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, ही इज फ्रॉम ईसी. ऐसे करके डिवाइड करना पड़ेगा. यस सर. अभी मान के चलो ये नहीं रहेगा, तुम्हारा एक ही स्ट्रीम रहेगा तो क्या होगा, तो कोई तुम्हारा दिक्कत एक ही नहीं. रोल नंबर रहेगा. हाँ, एक ही रहेगा. तो इसीलिए स्ट्रीम माइक्रोप्रोसेसर के लिए एक ही था. वो प्रोग्राम मेमोरी भी हो सकता है और डेटा मेमोरी भी हो सकते हैं, मगर इसमें 8051 में प्रोग्राम मेमोरी इज डिफरेंट एंड डेटा मेमोरी इज डिफरेंट, यस सर. बिकॉज आर्किटेक्चर इज डिफरेंट. In 8085 में architecture is von Neumann architecture, 8051 is nothing but a Harvard architecture. I will be discuss what is the von Neumann architecture, what is the Harvard architecture. यस सर. तो इसमें पता कैसे चलेगा सर, मतलब ये डेटा मेमोरी से गया है कि प्रोग्राम मेमोरी से मेरा मिला है, मतलब मिला है, right? It will be discussed whenever I discuss in a pin configuration. पिन का फंक्शंस कुछ होगा, उसमें तुमको पता चलेगा. जब हम पिन कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तब तुमको पता चलेगा, राइट? यस सर. ठीक. ठीक है सर. This is the microprocessor system which I am already discussed. No need to discuss over here. Is the microcontroller system which is also I am discussed. And this is nothing but a a microprocessor system where a computer system, whatever you can say, RAM, ROM, all are connected externally. And if it is a microprocessor system, so it is a microcontroller system. All are in the chip itself, and it is all are connected externally. ये बाहर से लगाना पड़ता है, ये सब कुछ इसके अंदर ही है, एक आईसी के अंदर ही है. So it's the difference between microprocessor and microcontroller, whatever I am discussed. Next, the difference between microprocessor and microcontroller, which I am already discussed. Next, these are the applications of microcontroller. These are the applications of microcontroller. The toothbrush, automatic toothbrush, or robocar, all are nothing but a using of microcontroller. This is nothing but a robo dog.
These are the 4-bit microcontroller. These are the 4-bit microcontroller. I am talking about the 8-bit microcontroller. We are talking about the 8-bit microcontroller, that is 8051. This is a 8-bit microcontroller. Remember, this is a 8-bit microcontroller. This is a 8-bit microcontroller. This is a 8-bit microcontroller. So 8-bit microcontroller, just see Intel. Intel is nothing but a 8051. Intel is nothing but a 8051. Intel is nothing but a 8051. And you know, pins is 40 pins IC. It is 30 IO lines. What is this? I will be discussed later on. 2 counter, RAM 128 byte, ROM 4K, and total memory capacity 128 kilobyte. ES is nothing but a external memory. Total maximum memory capacity 128 kilobyte. Whatever I am discussed, 64K for program memory and 64K for data memory. And how it will be, how 32, how 2 counter, RAM, ROM, I will be discussed later on. But you just see it is a 8-bit microcontroller. Some 16-bit microcontroller is also there. Those are the nothing but those. Next is the von Neumann architecture and Harvard architecture and modified Harvard architecture. This is the definitions. But if you show the picture, you can understood. This is the von Neumann architecture. In von Neumann architecture, you see where program memory and data memory in the same locations, the same block, program memory and data. But in a Harvard architecture, you see program memory is different and data memory is different. Program memory is different and data memory is different. So that's why 64 KB over here and 64 KB over here. The total is 128 kilobyte. But over here only 64 kilobyte. That is the von Neumann architecture, and this is the Harvard architecture. This is the instruction set. I will be discussed what is the CISC and RISC. These are the architecture of 8051. It's a very important one. It's a you able to understood. It's a very important one. Otherwise, you cannot understood the others one. Just see. It is an interrupt controller. I am starting from that blocks. Okay, and ending will be this block. So it is an internal, interrupt controller. Interrupt controller means, which is control. Means, say in a class monitor system, I send a message to the class monitor that this message, this message will be circulated to others. So it will be circulated. Similarly, if any queries, any queries is there for the student's point of view, the student will be first given to the class monitor or class CR, whatever you say. So class monitor or class CR will be get the data from the other students, get the questions from the other students. Then he will be accumulate and he will be sent one by one. How it will be sent one by one? According to their priority. Depend upon the priority, send one by one to me, and I will be given answer one by one after another, one after another, and one after another. So as a result, he or she will be get the total result. Next, my question is that, interrupt controller, what is the function? Just see here, 2 external interrupt are coming into the interrupt controller. 3 internal interrupt are coming into the interrupt controller, but only 1 interrupt are sending into the CPU. Matlab, maybe the interrupt controller have several interrupt coming into the interrupt controller, but only 1 interrupt are sending into the CPU. That is the function of interrupt controller. So it have 2 external interrupt, 3 internal interrupt. Out of these 5 interrupt, only 1 interrupt are sending into the CPU. That is the function of interrupt controller, which is available on chip itself. Next, 4K ROM. This is used as a program memory. Not a data memory. This is used as a program memory. So program memory, program memory total capacity is whatever I say. Program memory total capacity. Tell me, sir.
4 program kb का memory sir 64 KB. 64 kilobyte. Absolutely correct, sir. 64 kilobyte. Total memory capacity is 64 kilobyte, right? So out of 64 kilobyte, 4K ROM on chip itself, 4K ROM on chip itself, if you required, you can connect another 60K. If you required, you can connect another 60K. Sir, what are the significance of 4K? Means why it is not 64K is available on the on chip? Because you know whatever you program will be done, it's not a big program. 4K means near about 4,000 line program you can write. You know, whenever you do any kind of circuit, you see that within the 4,000 maximum project can be covered. Maximum project can be covered, no required of further memory. So if you require extra memory, means extra money also is required. So to reduce the cost of the microcontroller, it is given 4K. But if required, you can connect another 60K. You can connect another 60K. Why another 60K? 64K minus 4K, that is another 60K you can add. Some microcontroller also have 8K internal memory. Some microcontroller also have 8K internal memory. In that particular case, if you required, you can purchase all those ICs also. Why 8051? It's nothing but a 51 is just like a family member. In 51 family members, several ICs there. More than 50,000 ICs is there in 51 family member. Those ICs is nothing but a basically same features, same characteristics, same programming, same instruction set are followed. So this is the reasons, we are using the 8051. 51 is just like a branding name. 51 is just like a branding name. With the help of 51, we have a several group. In several group, we have several several ICs is there in a single group. That is called 51 family member. Next, sir, 128 bytes RAM. 128 bytes RAM. It is nothing but a data RAM. It is a data memory. It is nothing but a data memory. So, what are the significance of data memory? It also have a 64 kilobyte data memory. So you have 128 byte data memory. If you required, you can connect externally. If you required, you can connect externally. But you have 128 byte internal RAM. Just see the arrow. Every cases both are connected is a bidirectional arrow. Say RAM, bidirectional arrow. Say timer, counter, connected bidirectional arrow. See ROM, only one unidirectional arrow. Because ROM is nothing but a read-only memory. ROM is nothing but a read-only memory. You cannot write. That's why single arrow. Right? Next, timer oblique counter. What are the timer oblique counter? Here two timer or two counter. Here two timer or two counter. One is timer 0 and another is timer 1. One is timer 0 and another is timer 1. One is timer 0 and another is timer 1. What are the functions? It is used nothing but a to generate the clock, to generate the delay, to generate the delay actually. So it nothing but a counting the clock. It nothing but a counting the clock. So 216-bit timer or 216-bit counter. Why it is called timer? Why it is called counter? Whenever count the internal clock pulses, then it is called timer. Whenever count the external clock pulses, then it's called counter. Say maybe मैंने तुमको बोला you count from 0 to 100. You are counting like that 0 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 100. You are counting like that, means it is the first, it will be depend upon your speed. It will be depend upon your speed. But I give you another task that I give a punishment to a particular students that you up and down 100 times. 100 बार तुमको उठक बैठक करना पड़ेगा. So it will be counting by another persons. So the another person which is counting, that will be depend upon that particular person is nothing but a up and down. Means it will be counting the external clock pulses. Whenever counting the external clock pulses, then it's called counter. Whenever counting the internal clock pulses, then it is called timer. Basically function is same, either counting internal clock pulse or counting the external clock pulse. If internal clock pulse count, then it's called timer. If counting the external clock pulse, then it's called counter. Basically mainly reason is that to generate the delay, timer and counter is used. Other than lots of function is there.
Next, UART. UART, full form Universal Asynchronous Receiver and Transmit. Full form UART is nothing but a Universal Asynchronous Receiver and Transmit. Universal Asynchronous Receiver and Transmit. So what are the functions of Universal Asynchronous Receiver and Transmit? Is nothing but a Universal Asynchronous Receiver and Transmit is nothing but a TXD used for transmission and RXD used for reception. TXD used for transmission and RXD used for receptions. I am repeating once again, TXD used for transmission and RXD used for reception. TXD means transmission and RXD means receptions. Next, sir, 4 IO port, P0, P2, P1, P3. Remember, port means hand. Port means hand. In my hand, 5 finger is there, but in every port, 8 finger is there. In every port, it's 8 finger is there. If every port, it's 8 finger is there. So how many fingers is there? 8 plus 8 plus 8 plus 8. So 32 fingers is there. 32 fingers is there. Means 4 port, 32 pins are there. 4 port, 32 fingers is there. That is the we can say that is nothing but a 4 port. Just see, after P0 it is a P2, not P1. Why? P0 and P2 used for address oblique data bus multiplex. P0 and P2 used for address oblique data bus multiplex. P0 and P2 used for address oblique data bus multiplex. Next, bus controller, which is nothing but a used to control all the buses. Used to control all the buses. What is the bus controller? Is nothing but a used to control all the buses. Bus controller is nothing but a used to control all the buses. Next is oscillator circuit. What are the function of oscillator circuit? Is nothing but a generate the clock. It's nothing but a generate the clock. Where is connected with a crystal, which is nothing but a generated clock and given to CPU. And CPU is just like a brain of a human being. It's nothing but a 8-bit CPU to used for optimization for process control. In any kind of control, it's nothing but a done by the CPU. It's called 8-bit CPU, which is used for optimization for process control. That is the function of whole architectures. If anyone have any kind of queries, you can ask. उसमें सर जो टाइमर और काउंटर है सर, तो उसमें इंटरनल जो है क्लॉक इंटरनल दे करके जैसे फ्रीक्वेंसी दे करके काउंटिंग किया जाता है, और उधर से बाहर से दे करके, मतलब वो समझे नहीं सर। हम तुमको बोला तुम 1 से 100 तक काउंट करो, तुम क्या करोगे? तुम किसी के ऊपर डिपेंड करोगे? नहीं सर। तुम तो एकदम लगातार करते जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, ठीक है? मैंने बोला एक जन को पनिशमेंट दिया और तुमको बोला उसको काउंट करने के लिए, वो क्या करेगा? उठक बैठक करेगा। मतलब वो एक बार उठेगा बैठेगा, उसके बाद क्या बोलेगा? सर हम और दुश्मन कुछ करेंगे नहीं, कोई बदमाशी नहीं करेंगे, कोई एनोटेशन इस स्लाइड में नहीं लिखेंगे, हमको सर छोड़ दीजिए। तो ये सब बातचीत चलते रहेगा तो तुम्हारा काउंटिंग क्या होगा? पॉज रहेगा ना, पॉज रहेगा। तुम तो काउंटिंग कर नहीं पाओगे, तुम आगे तो बढ़ नहीं पाओगे। नहीं सर। मगर तुमको 100 तक काउंट करना है, मगर ये काउंटिंग जो है तुम्हारा बाहर का कोई किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब कोई भी क्लॉक पल्स इंटरनल क्लॉक पल्स भी हो सकता है, बाहर का भी क्लॉक पल्स हो सकता है। जब बाहर का क्लॉक पल्स आएगा उसका जब काउंट करेंगे तब हम बोलेंगे उसको काउंटर। जब इंटरनल क्लॉक पल्स मतलब जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल है इससे जो जनरेट कर रहा है उसको ही काउंट करना है, मतलब इंटरनल क्लॉक पल्स को काउंट करना है। सो इट विल बी नथिंग बट ए टाइमर। फंक्शन बेसिकली सेम, वो काउंट करना, मगर किसको काउंट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। कभी कभी टाइमर बोलता है, कभी कभी काउंटर बोलता है। और सर ये वाला सर नीचे वाला UART वाला का जो फंक्शन है किस तरह से, मतलब UART TXD एंड RXD। मतलब इसका फुल फॉर्म है UART इस फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमिट। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमिट। इट इज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशंस। First, I am telling about why the serial communication is required. Where you from, sir? अभी किधर हो तुम? हाँ सर। अभी किधर हो तुम? अभी सर हम अभी दुमका में है सर। दुमका में हो, वेरी गुड। सर हम तो अभी कलकत्ता में हैं, लगभग 400 किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम इधर से दुमका, राइट? इफ हम दुमका में रहते थे तो तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम 8 लाइन कनेक्ट कर सकते थे। 8 लाइन हम कनेक्ट कर सकते थे, 8, राइट?
8 sir. line I can connect with you, it is called parallel communications. बट अभी 400 किलोमीटर्स है, इसमें 8 लाइन जोड़ना मतलब समझ रहे हो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और कभी भी एक लाइन कट हो जाएगा तो पूरा कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग एक लाइन से डेटा पास करता है, एक लाइन से, इसको हम लोग बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन, एक एक सेकंड में एक एक डेटा जाएगा, मतलब एक एक सेकंड में 10 डेटा चला गया, 20 डेटा चला गया, मतलब एक एक सेकंड एट ए टाइम जाएगा। और पहले जब 8 लाइन था, एक साथ 8 data bit will be passed, means 8 data will be passed from one place to another place, is nothing but a parallel communication. And serial communication is nothing but a, जब long distance रहेगा एक एक करके data bit transmit करेंगे, that is called nothing but a serial communication. So it is a serial communication, it is parallel communication, it's nothing but a your serial communication, it's nothing but a your parallel communication. Serial communication में जब जाना है डेटा, जब एक बार जाएगा एक बार आएगा भी, तो जब जाएगा तब TXD से जाएगा, आएगा जब RXD से रिसीव करेगा। So data will be received through RXD, data will be transmit through TXD. It's called serial communication and it is a full duplex. What is a full duplex? What is a simplex? What is a half duplex? Simplex is nothing but a just like a television. Television में खबर कुछ भी दिखाए, तुम उसका सामने जाकर बोल दो जो ये गलत दिखा रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, किसी को गाली दे दो, कुछ भी कर दो, वो उधर से कुछ सुनाई नहीं देगा। मतलब इट इज सिंपलेक्स, ओनली वन वे कम्युनिकेशंस। एंड हाफ डुप्लेक्स मींस जब हम बोलेंगे तब तुम लोग नहीं बोलोगे, जब तुम बोलोगे तब हम नहीं बोलेंगे, इट इज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। मींस ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन बोथ नॉट इन अ सेम वे, सेम टाइम, इट्स कॉल्ड जस्ट लाइक अ वॉकी टॉकी। एंड यू नो फुल डुप्लेक्स, हम भी बोल रहे हो तुम भी बोल रहे हो, एक ही साथ बोल रहे हो, तो इसे फुल डुप्लेक्स, जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन। तुम बोल रहे हो मम्मी हम पढ़ाई कर रहे हैं मगर पीछे से आवाज आ रहा है, क्या आवाज आ रहा है, कोई मार्केट में तुम गए हो तो तुम पकड़ा जाओगे, इट इज अ कॉल फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट सर, एनी क्वेरी? इसीलिए सर मतलब यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स हो रहा है, मतलब ट्रांसमिट होगा उस समय रिसीव नहीं हो सकता। हम डुप्लेक्स नहीं बोला, मैंने बोला फुल डुप्लेक्स, मैंने बोला फुल डुप्लेक्स, मैंने तीनों का ये बोल दिया डिवीजन। वन ओवर हियर इट इज अ फुल डुप्लेक्स, प्योरली फुल डुप्लेक्स। और एसिंक्रोनस वर्ड का क्यों यूज किया जा रहा है सर इसमें? हैं? एसिंक्रोनस वर्ड का क्यों यूज किया जा रहा है इसमें? एसिंक्रोनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिंक्रोनस होगा तो सिंक्रोनस में भी काम चलेगा, मगर सिंक्रोनस होगा तो एसिंक्रोनस में काम नहीं चलेगा। जैसे what is a PC? PC is nothing but a program counter, the next instruction to be executed, that is something is stored into PC, that is the function of program counter. Are you understood? नहीं सर, आप बहुत फास्ट कर दिए। Yeah sir, means your speed and my speed is different, your speed is less with respect to me, am I right? Yes sir. I am the faster device, I am the microcontroller, I am the faster device, but other peripheral are not faster with respect to me. That's why we are communicating with asynchronous. In asynchronous होगा तो क्या करेंगे, ये synchronous communication में मैंने तुम्हारे साथ communication किया था, asynchronous में क्या करेंगे, like what is a PC? Yes sir, PC is nothing but a, yes sir, program counter, yes sir, the function of the program counter is nothing but a, yes sir, the address of the instruction, yes sir, store into the PC, yes sir, means I am given a small data, means 1 byte data, and you are giving me acknowledgement, I will be sending another data. In this way, you know, data communications will be going on. This communication type is called asynchronous communication, when your speed and my speed may not be matched. Yes sir. Anything else? मतलब जब मैच नहीं होगा उस समय उसको कहेंगे एसिंक्रोनस कहेंगे सर? हाँ? मतलब स्पीड दोनों का मैच नहीं करेगा? मैच कभी नहीं करेगा, मैच करेगा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एसिंक्रोनस से मैच करने से गलत है, इसमें भी कम्युनिकेशन हो सकता है। अभी तुम्हारा स्पीड हमारा स्पीड एक ही है, मगर क्या है ना, हम इसी मोड में बोल रहे हैं, तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम तो हर एक बाइट के बाद तुम तो डेटा हमको दे रहे हो, एक्नॉलेजमेंट आई विल बी सेंड अनदर डेटा। एसिंक्रोनस में जाओगे मगर स्लो हो जाएगा थोड़ा, मगर सिंक्रोनस में जाएंगे तो थोड़ा फास्ट काम तो होगा ही, ये बात कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मगर वी आर यूजिंग एसिंक्रोनस बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस बोथ। ओके सर, मतलब यहाँ पर डेटा जो जाएगा एक तरफ से ट्रांसमिट होगा रिसीव होगा तो दोनों का स्पीड सेम नहीं रहेगा? सेम नहीं भी रह सकता है, और इस वजह से डेटा दे रहे हो पेरिफेरल को, कैसे सेम हो जाएगा, कैसे वो भी 12 मेगाहर्ट्ज में काम करेगा, ये भी 12 मेगाहर्ट्ज में काम करेगा।
आएंगे हम सीरियल कम्युनिकेशन फास्टली पढ़ाएंगे, सीरियल कम्युनिकेशन डिटेल्स में है, कैसे डेटा पैकेज होता है, कैसे सीरियल सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, आई विल बी डिस्कस लेटर ऑन डिटेल्स, बट it not less than before 6 days, it will be coming later on. बस कंट्रोलर सर मतलब बस Which का is control all the buses, सभी बस को कंट्रोल करेगा, मतलब किस सभी प्रकार बस से को कंट्रोल कंट्रोल करेगा सर, मतलब कहे तो हैं? मतलब किस प्रकार से कंट्रोल करेगा कैसे? कंट्रोल बस मतलब किसके पास अभी बस का कंट्रोल रहेगा, दिस इज जस्ट लाइक ए बस मास्टर, मींस just like your college principal sir, you know Yes, sir. कौन सा स्टूडेंट क्लास करेगा कि नहीं करेगा, अभी कॉलेज होगा कि नहीं होगा, it will be decided by principal, just like a control all the classes, just all the buses, means this is the data will be coming from this data will be coming from that, this data will be sending to timer counter or coming from timer counter into the CPU, all are controlled by the bus controller. ओके सर। और इंटरप्ट कंट्रोलर में मतलब सर इंटरप्ट जो दे रहे हैं इधर से 4 के रोम से दे रहे हैं तो उधर तीन से तीन एक ही तीन मतलब तीन इंटरप्ट जा इंटरनल रहा 3 एक्सटर्नल 2, है। ओके सर। out of 5 only one interrupt ascending into the CPU, इसके अंदर जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको भेजेगा पहले, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी, उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी, या so on and so forth. ओके सर। इसमें भी हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है क्या सर? हाँ, ओके सर। next, these are the features, you can read it. जो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो लगाते हैं सर, ऑसिलेटर, तो उस क्रिस्टल ऑसिलेटर की जगह दूसरा ऑसिलेटर भी हम लोग लगा सकते हैं उसमें? जैसे दूसरा जैसे क्लैप ऑसिलेटर भी होता है सर, हार्टले हैं? ऑसिलेटर भी होता, हार्टले ऑसिलेटर भी होता है। ना, इधर क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाओ, नहीं तो फंक्शन जनरेटर लगाओ, जिधर हमको क्लॉक मिलेगा, स्क्वायर वेव मतलब पल्स मिलेगा, क्लॉक अच्छा सा क्लॉक मिलेगा, और नहीं तो ओके एक्स्ट्रा ये लगा दो, तुम्हारा फंक्शन जनरेटर होगा तो फंक्शन जनरेटर लगा दो। फंक्शन जनरेटर कैसे लगाएंगे, पिन कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ओके सर। एंड क्रिस्टल भी कैसे लगाएंगे वो भी नियम है, ऐसा देखने से इतना इजी लग रहा है, उतना इजी नहीं है, दिखाएंगे कैसे लगाएंगे। यस अभी सर। है आज के शेड्यूल में ही है, आज का तो टाइम अभी है ना बहुत देर तक। हाँ, these are the features, you know, these are the another architecture, this is are the nothing but a in with respect to whatever the you see, rather than that two register are there, one is A and another is B, one is A, another is B. A is for stand for 8-bit accumulator and B stand for okay, today I think सेकेंडरी एक्यूमुलेटर सर। I just explained first, then I will leave it because today time near about is closing, but I just explained this diagram, I not take more than 10 minutes. So just see, A is nothing but a 8-bit accumulator and B is nothing but a another 8-bit registers. So what are the purpose of A and B? A used for accumulator. Accumulator is a special kind of register. What does it mean, register? If anyone have any kind of idea, register is just like I can say just like your hostel wardrobe, or if you are staying in a mess, maybe you have a trunk means you can put your clothes, your books, everything in your trunk. So with the help of this trunk, you can store the data. With the help of this trunk, you can store the data. So basically in my college life, I purchase a trunk in a bigger size where I can go down into the trunk also. So it's a huge trunk. So you also procure the same kind of things. So this trunk is just like a register where you store your clothes, your books, everything. It is for temporary purpose. For temporary purpose it can be stored. So that is nothing but a trunk. The several kind of, this is nothing but a register. Several kind of registers you have, those are nothing but you have a special kind of register is called accumulator, who is just like your money purse.
you know, whenever you are going into a hostels or in your mess, your father is given a 3,000 rupees per month, and your mother given another 500 rupees that, and say that beta tum to bahut khana wana chhod diye ho, अभी थोड़ा बढ़िया से खाना खा लो नहीं तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, और 500 रुपीस, तो 3,500 जो हुआ 3,500 all are put it you know in your purse. And whenever you coming into the hostel, first 2 day you are not just like a king, and you are go to the market and you get golgappa or something like that. So whatever the cost is required, you are given from the purse, and what are the balance they are given, it will be put in your purse. So purse is just like a accumulator. Any arithmetical logical operation, all are done should be all are done should be from accumulator. Any arithmetical logical operation without accumulator is not possible. Any arithmetical logical operation without accumulator is not possible. Next is nothing but a B. What are the function of B? B used only for the multiplication and division operations. B is only used for the multiplication and division operations. B is used for the multiplications and division operations. Next, sir, another functions of B. B is nothing but another function is nothing but it can be used for data storage also. Sometimes it stores the data also. So B used for multiplication division as well as some data storage. So what are the functions of B? B basically, I am repeat once again, B basically used for multiplication, division, and some data storage. In the time of multiplications, if result is 16-bit, so higher 8-bit will be stored into the B register. At the time of divisions, remainder part will be stored into the B. That is the function of B registers. Next is nothing but a PC is program counter, and DPTR is nothing but a data pointer. DPTR also is two part. One is a DPH, another is DPL. One is DPH, another is DPL. Full form data pointer high and another is data pointer low. Together is DPTR and program counter. These two are the 16-bit register, program counter and DPTR. And these are the SFR registers, special kind of registers. SFR register, special function register, special kind of register. These are the IE, IP, PCON, SBUF, PCON, ATCON, and TMOD. So those are nothing but a TMOD is full form timer mode. TCON is nothing but a timer control. SCON is nothing but a serial control. SBUF is nothing but a serial buffer, and PCON is nothing but a power control. And IER and IP is nothing but a interrupt enable and interrupt priority. These are the nothing but a special function register. These are the nothing but a special function registers. Next, sir, there are 4 register: bank 0, bank 1, bank 2, bank 3. These are the 4 register, 4 bank 0, bank 1, bank 2, bank 3. Every bank have 8 register. I will be discussed later on, but I given a brief descriptions about it. Every bank have 8 registers. Every bank have 8 registers. Name is R0 to R7. I will be discussed later on. R0 to R7. And PSW just like a status flag. Just like a status flag register of 8085. This is a status flag. With the help of that, we can know the status of any arithmetical logical operations. And these, if we have a 4 port, port 0, port 1, port 2, port 3, the data will be passes through this kind of latch IC. The data will be passes through this kind of latch IC, and it is nothing but a special function registers. Special function register is a RAM. Is a special function register. Also, it is a RAM. What are the RAM? I will be discussed. What are the internal RAM? What are the ROM? I will be discussed later on. Tomorrow. This is another architecture. Okay. And you just see ROM is a 4 kilobyte, RAM is a 128 byte, timer is a 2, IO pins is 32, serial port is 1, and interrupt sources 6. But I am telling about 5. Why 1 is increase? Reset. There is also is assuming as an interrupt, but it is not. In a just like a regular interrupt. It is a special kind of interrupt. It is a reset. Reset the microcontroller. It is used. So reset also is an interrupt. So we have a 6 interrupt. Out of that, 5 interrupt are coming to the interrupt controller, and one is interrupt is coming to the directly, which has the highest priority. Anything? If you have any queries, you can ask. Sir. Yeah.
इसमें जो एक टाइमर जो होता है वो टाइमर 0 टाइमर 1 और एक टाइमर नाम सुने हैं सर वॉचडॉग टाइमर करके होता है। वॉचडॉग टाइमर, हाँ वो क्या होता है सर? वॉचडॉग टाइमर इधर नहीं है सर। किधर होगा सर? हैं, वो दूसरा माइक्रो मतलब कंट्रोलर में है। किस? वो आर्म में है, हाँ सर। इधर नहीं है, 8051 में नहीं है वॉचडॉग टाइमर। बोल देंगे ओके। वॉचडॉग टाइमर फंक्शन क्या है, लास्ट में बताएंगे। टाइमर पहले समझ लो, टाइमर का कैसे प्रोग्राम करते हैं समझ लो, वॉचडॉग टाइमर तुम भी कर पाओगे। ओके सर। Any queries? If you have, you can ask. I'm creating a Google, Google Classroom, so that will be the best. I'll be creating a Google Classroom. It will be accept today, so I think it will be best for you. I will be given the notes, and one thing which I will be given, that is nothing but another thing is they तो given. उसमें I सर will जो be आरएसटी जो दिया रिसेट वाला जो दिया जाता है सर इंटरप्ट, तो वो मतलब किधर से दिया जाता है? उसमें तो 5 ही को दिखा रहता है, उसमें मतलब इधर से 3 जा रहा है, उधर से बाहर से 2 आ रहा है, तो छठा वाला किधर से आ रहा है? रिसेट जब आप पिन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा वो नेक्स्ट वाला किधर से आ रहा है। मगर रिसेट आल्सो assuming as a interrupt, but you cannot, it's not coming in a priority or something like that. It's not coming in a priority. It will be just like a, I can say about this is not just nothing but a special kind of interrupt you can say. But interrupt is in generally 5 होता है, but it can be 6 if you are assuming this is as a interrupt. मतलब इसका सर एड्रेस कुछ नहीं होता है सर? एड्रेस जैसे होता है सब है, बाकी सब एड्रेस सब है, रहता है? सबका एड्रेस है, इसका भी एड्रेस है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एड्रेस है। तुमको और एक चीज बताते हैं। मान के चलो इन योर कंप्यूटर में भी हैंग हो जाता है ना कभी कभी। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय हैंग? यू हैव एनी काइंड ऑफ काम आइडिया करना व्हाट डू यू सर मीन बाय बंद हैंग? कर जाता है, मतलब पूरी तरह से फंक्शन करना बंद हो जाता है। पूरी तरह से फंक्शन करना बंद हो जाता है। दिस इज नॉट ए आंसर फॉर ए इंजीनियर। This answer is nothing but just like a general category students means हो BA सकता है सर BSc। ये सर्किट फेलियर हो जाए, सर्किट फेलियर होने से भी। एकदम नहीं सर, एकदम नहीं सर, एकदम नहीं सर। सर कमांड इन्फिनिटी टाइम तक रन हो जाता है सर, इसका जब हम No, इनपुट कमांड देते microprocessor or whatever microcontroller are enter into the infinite loop. Enter into the infinite loop, then it is called it's called a hang. So in a hang conditions, what we are doing, we are again restart, और रिस्टार्ट करता है ना, एक बटन होता है जिसको हम लोग दबाता है रिस्टार्ट, फिर से यस कंप्यूटर को सर। रिस्टार्ट करता है। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रिस्टार्ट? रिस्टार्ट इज नथिंग बट अगेन द ओएस विल बी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। again OS start from the beginning means OS will be starting again from the zero, means whatever the OS is there means eliminating from this program again coming into the fast. That is nothing but a functions. उसमें क्या बोले सर? इन्फिनाइट लूप मतलब हो जाता है? इनफाइनाइट लूप मतलब क्या है? here is jump here, what does it mean? एक ही लाइन में बार बार रिपीट करेगा, यस सर। कभी उस लूप से निकलेगा ही नहीं। कोई हाँ प्रोग्राम का सर। मतलब गलती की वजह से हो सकता है। कभी कभी क्या हो जाता है, मतलब माइक्रोप्रोसेसर ऐसा कोई जगह में पहुंच गया जिसमें वो निकल नहीं पा रहा है, उसी प्रोग्राम में बार बार घूमते जा रहा है, तो क्या हो रहा है? इसका नथिंग बट है एंटर इनटू द इनफाइनाइट लूप, then it is called hang, and then it is a restart. Just reset is just like a restart, nothing else. Whenever you reset, microcontroller will be start from 00008, means reset vector location is 00008, and how it will be done tomorrow I will be discussed whenever I discuss the pin configuration. यस सर। So I create a Google Classroom. I will be given every day in a Google Classroom the link for the next day. Okay, anything else? Anyone have any kind of queries I can solve, or you can ask tomorrow, no issues, because I'll be there next another 10 days. You have any queries? कल भी इतने बजे से होगा सर? Same time.
और लिंक कहाँ से मिलेगा सर? Google Classroom. I will be given a Google Classroom. ओके सर, Today I will be create a Google Classroom. ओके सर। Notes, link, video for today's class. Everything will be available in that particular Google Classroom. Clear? Anything else? Santosh Kumar, you want to say something? No, sir. Sorry. Okay, no issue. Thank you and bye bye. सर Yeah, Thank you so much, sir. क्वेश्चन है सर, बोलो. जैसे कि 512 जो है कि 512 बाइट का है सर, मतलब जैसे एक मेमोरी है सर, उसका मतलब रेंज कितना होगा सर? उसका मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? समझ में नहीं आया. जैसे 512 बाइट का एक मतलब कोई भी मेमोरी है सर, तो उसका मतलब 512 लोकेशन का होगा ना सर कुछ? हाँ, 512 MB का मतलब 512 बाइट का मतलब कोई एक मेमोरी है सर, हाँ, तो उसका मतलब लोकेशन कैसे, मतलब उसका रेंज कैसे पता करेंगे सर? मतलब तुमको रेंज निकालना पड़ेगा. वो तो हाँ, डिपेंड रेंज करेगा मतलब उसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर क्या है था उसके ऊपर आएगा सर. आइदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वही है हमारा मेमोरी इंटरफेसिंग आएगा. यस, यस सर, है सर. धीरे धीरे सब आएगा. यस सर, करते रहो, सब आते रहेगा. मगर उसका हार्डवेयर छोड़ के तुम बोल नहीं सकते उसका रेंज कितना होगा, किधर से किधर होगा. हार्डवेयर देख के बताना पड़ेगा. आएंगे हार्डवेयर कैसे डिजाइन होगा, उसके हिसाब से मेमोरी रेंज कैसे होगा, आएंगे सब. यस सर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी जिसमें इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक. होता है ना सर कि चिप सिलेक्ट कितना होने वाला है और हाँ मतलब कितना हाँ चिप हाँ सिलेक्ट हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, वो आएगा आएगा आएगा. डोंट वरी आएगा. इट विल बिकम. Is very interesting subject. If you learn, you will be got a lot of things. You get a भगवान का दर्शन मिल जाएगा ऐसा बात है. If you learn microcontroller, you can do anything. You can do anything. ARM, peak, anything processor you can learn within 2-3 days. If you learn microcontroller very well. What is the peak microcontroller? Nothing but a ADC and DSC connected with the microcontroller 8051 and it is generate a peak. Yes, sir. Nothing else. Base is nothing but 8051. Okay, tomorrow I will be discuss. Okay. Okay, sir.